If car is moving at constant speed upward on an inclined plane of length d and travel height h, now you can write power as mg d sine theta upon t, right? Either you write power like this or you like power mgh, क्योंकि mg d sine theta is mgh upon t. So mgh power is mg d sine theta upon time or mgh upon time. Both are correct, right? Because both are potential energy. Rate of change of energy is power, or work done. Both are work done. But now d upon t could be written as v. Yeah. So you may write it p is equals to mg v sine theta, because d upon t would become, this would become v. इसको you cannot write v, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा mgh upon t on inclined plane. You can't write this क्योंकि car is moving in this direction, height is here. So you cannot replace h upon t. Time यहाँ से यहाँ तक का लग रहा है, this t is given. So mgh upon t or mgv sine theta. You cannot replace this h upon t with v. You can't write mgv. अगर आप इस तरह से लिख देंगे, that would be wrong. Okay? आप क्या मैं h upon t को speed लिख सकता हूँ? No, you cannot write like this. d upon t, because car is moving in the other direction, not along the height. इससे last वाले example में mass was moving vertically upward, so height upon time को you could have written v, but now you cannot. Okay, got it? So this is what power is in different situation. One more thing, efficiency. Efficiency is power out upon power in into 100. This is efficiency. Or power out is actually equals to power in minus power lost or power waste. So efficiency could be written as power in minus power loss upon power in into 100. Or similarly, you can write power in as power out plus power loss. यूं भी बन सकती है, और power out as it is. Power in को you can write power out plus power loss into 100. So how to calculate efficiency in different situations? Let's see. For example, ये कार की example है. Car moving up on the plane here. So car is moving up with the speed v, and if there are resistive forces, so efficiency is equals to power out, which is equals to mg v sine theta. This is output power, divided by input power is mg v sine theta plus resistive force into velocity.
Look, there is a resistive force acting. So total forward force, total power is the power of forward force. Or you may write this down. Efficiency is mgv sine theta divided by f into v into 100. Both are correct for efficiency. What is the difference? Look, denominator mein you have to write the total input power. So there are two work is being done. One, gravitational potential energy is changing, and the other resistive force के against work done हो रहा है. So the total work done is mgh mgd sin theta plus work done against resistive force. और क्योंकि power लिखते हैं तो that's why v से multiply किया. While output is only the rate of change of potential energy, because जो friction वाली work done है वो waste हो रही है, it's being wasted. So the useful power is only work done against gravity वाला is the useful power. So you may write this down. ऐसा क्यों है? अब कहेंगे total or input power is uh, gravitational potential energy GPE plus work done against resistive forces. ये total है. अच्छा, क्योंकि kinetic energy तो है ही नहीं, moving at constant speed है. While output क्या होता है? टोटल में से लॉस निकाल लो लोग. दिस आउटपुट टोटल में से, दिस इज पावर इनपुट, उसमें से लॉस निकाल लो. तो आउटपुट इज एक्चुअली ओनली जीपीई, क्योंकि लॉस इज रेजिस्टिव फोर्सेस वाली पावर. सो दैट्स व्हाई आपने निकाल लिया रेजिस्टिव फोर्स वाली पावर, दैट बिकम आउटपुट. तो यही मैंने लिखा है. गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एफिशिएंसी इन डिफरेंट सिचुएशन. अच्छा, देयर आर सर्टेन केसेस. सर ये एफ इंटू वी क्या चीज़ है जो आपने डिनोमिनेटर में लिखी हुई है? आप चाहें तो इसको पूरा अगर फॉरवर्ड फोर्स लिखें तो ये फॉरवर्ड फोर्स बन जाएगी ना. ये जो एम जी साइन थीटा और प्लस फ्रिक्शन होती है, किसके बराबर होती है एक्चुअली? फॉरवर्ड फोर्स के. फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस रेजिस्टिव फोर्स. सो आई कैन राइट एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन एज फॉरवर्ड फोर्स. यानी एफ जो होती है दिस इज टोटल फोर्स है. सो इफ यू राइटिंग एफ डॉट वी, यहाँ पे हाँ लिख सकते हैं, दिस कुड बी एफ डॉट वी. अगर आप टोटल पावर या टोटल वर्क डन लिखते हैं तो देयर आर टू वेज टू राइट टोटल वर्क डन. ठीक है सर. टोटल वर्क डन को याद है, टोटल वर्क डन को आप लिख सकते हैं या तो टोटल फोर्स इनटू डिस्टेंस, और यू कैन राइट टोटल वर्क डन एज, अब टोटल फोर्स की जगह हम रख देते थे वो एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, तो फिर वो इनटू डिस्टेंस करते हैं तो ये बन जाता है. तो इन द सेम वे total power can be written as mgv sin theta plus f dot v, or you can write total work done total power की जगह total force into velocity, it's the same thing. तो इस तरह से लिख सकते हैं. f is just हाँ ये लिख लें कि f है क्या? f is total forward force. यूं भी लिखी जा सकती है efficiency. so ये अच्छा, इसके अलावा efficiency निकाली जाती है मोटर की. efficiency of motor. Efficiency of motor क्या है? For example, you have a motor. This is a motor. Actually, motor is like pulley, and there is a mass attached to this motor. This is the motor. Pulley है कह लें, motor कह लें, but this pulley is being operated by electricity. So that's why we are saying this pulley as a motor. There is a mass attached to this. Now, this mass is being pulled upward with a force tension, and downward obviously the weight mg.
and it's being moved upward at constant speed v. So if I ask you what is the power output of the motor, power output मतलब आपको क्या दे रही है मोटर. सो मोटर एक्चुअली इस वेट को ऊपर लिफ्ट कर रही है. सो मोटर इज गिविंग यू आउटपुट एज एम जी वी और एम जी एच अपॉन टी और टी इंटू वी, टेंशन इंटू वी. बोथ आर करेक्ट राइट, बिकॉज वी एन टी और एम जी एक ही बात है. सो what output is giving you, that it is raising the mass, so it's increasing the gravitational potential energy. Rate of gravitational potential energy is increasing. You may call this thing as rate of change of GPE, rate of change of gravitational potential energy. What is the input? Power input क्या होती है मोटर को, कोई बताएगा? Input power of the motor is electrical actually, which is voltage into current. मोटर को इनपुट क्या दिया जाता है, वोल्टेज एंड करंट. पावर इज इक्वल्स टू वी आई, वोल्टेज इनटू करंट. आगे चल के पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में. सो द एफिशिएंसी विल बी आउटपुट दैट इज एम जी वी और टेंशन इनटू वी डिवाइडेड बाय वी इनटू आई. डू नॉट कैंसिल द टू वी. एक वोल्टेज है और एक ऊपर वाला स्पीड है, नीचे वाला वोल्टेज है. सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ मोटर. अच्छा, similarly there is another example, efficiency of a dam, efficiency of डैम कह लो और क्या कहते हैं, पावर स्टेशन. सॉरी, they ask you actually question regarding this power station में. You know what happens, at a certain height water is stored like this, and then there are gates that controls the water, and there are ramp, there is a ramp. रैम्प के एंड पे इधर एक टरबाइन लगी हुई होती है, देयर इज अ टरबाइन, और जनरेटर होगा इसके साथ ही, ये मैग्नेटिक जनरेटर है. यहाँ से आगे इलेक्ट्रिसिटी. तो वाटर यहाँ से रश करता हुआ आता है, वाटर फॉल्स ऑन द टरबाइन. टरबाइन is just hollow cylinder with some shafts, nothing else. This is turbine. टरबाइन कहते हैं हॉलो सा एक बड़ा सिलेंडर होता है, उसमें शाफ्ट्स लगी होती हैं, प्लेट्स लगी होती हैं. व्हेन वाटर फॉल्स ऑन द टरबाइन इट रोटेट्स. टरबाइन इज कनेक्टेड टू दिस जनरेटर. व्हेन टरबाइन रोटेट्स, generator rotates and electricity is generated. So there are electrical wires, electricity is generated. If I ask you now, this is electricity. So in this situation, power input. What is power input? Power input could be two things. Either it's kinetic energy, turbine को क्या मिल रही है, kinetic energy आके मिल रही है. This is input power. It's half mv square upon time, because power है तो kinetic energy का change, input power this. Or you may say कि input power is mgh upon t. Both can be considered as input power, because initially it is potential energy. This is height, ये height given होगी आपको. So initially this is height जिस पे water raised है. So water stores potential energy. So the input energy of the water is potential energy, which is converted into kinetic energy when it hits the generator. So both can be given. कि generator is receiving gravitational potential energy of water as its input energy, or generator is receiving kinetic energy of water as its input energy.
but output is fixed. Input could be 2, output is fixed. Output is electrical. Power output is V into I, that is electrical. So efficiency is the same. Efficiency is, now it's up to you. It's either mgh upon time upon vi into t, sorry, into 100, or it could be half mv square upon time into, upon time क्यों कर रहे हैं? Because while calculating efficiency we must write power output और input. नीचे भी power लिख रहे हैं, ऊपर भी power लिखेंगे. So this is the formula. Look, बिल्कुल reverse formula है. मोटर की efficiency है mgh upon time divided by vi, और डैम की पावर स्टेशन की efficiency is just opposite of that, है ना? Oh sorry, उल्टा लिख दिया मैंने. Output upon input ना. Output is vi upon its mgh upon t, or vi upon half mv square upon t. vi. Got it? Chalo, quickly copy this.